राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा
Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Girivaradhari. Jai Radha Madhava, Jai Kunja Vihari, Jai Gopi Jana Vallabha, Girivaradhari. Jaya Radha Madhava,
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Jagannath Baladeva Subhadra Maya Sudarshana Jai Jagannatha Baladeva Jai Subhadramaya Jayo Nitai Gaurango Nitai Gaurango Nitai Gaurango Nitai Gaurango Jai Nitai Gaurango Nitai Gaurango Nitai Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada Jai Prabhupada Hare Krishna Krishna Hare Krishna. So, a very warm welcome to all of you for today's session on the Srimad Bhagavatam. We'll start our session with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Ashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. So we discussed in our previous session how Uddhav ji, Sri Uddhav, he is talking about, he is speaking, he is narrating different pastimes of Lord Krishna in Braj Mandal, and he's saying that how Lord Krishna was transferred from Braj Mandal, from Mathura to Braj Mandal to Vrindavan by Vasudev, his father, because he feared Kansa. But then actually we discussed that Krishna is called Abhay Charan, so he does not fear anyone. But it's just that he wanted to relish the love of Vasudev, Devaki, and Nanda Maharaj, Yashoda Maya, and all the people of Vrindavan. And that is why Lord Krishna made a plan to shift to Vrindavan Dham. Now today we'll start with text 27, shloka number 27.
परितो वत्स पैर्वत्सांश चारयन् व्यहरद् विभुः यमुनोपवने कूजत् द्विजः सङ्कुलिताङ्घ्रिपे परितो वत्स पैर्वत्सांश चारयन् व्यहरद् विभुः यमुनोपवने कूजत् द्विजः सङ्कुलिताङ्घ्रिपे. Translation. In his childhood, the Almighty Lord was surrounded by cowherd boys and calves, and thus he traveled on the shore of the Yamuna river through gardens densely covered with trees and filled with vibrations of chirping birds. Now you see, what is Lord Krishna saying here? What is Uddhav ji saying here? So he's saying that Sankulitangripe, that Lord Krishna, how he lived in Braj Mandal or Vrindavan. So Parito Vatsapair Vatsamsh. So Krishna was surrounded by Vatsa. Vatsa means the cowherd boys and calves of Braj Mandal Vrindavan. And Charayan Vyaharad Vibhu. Vibhu means the Supreme Lord, because we are called as Anu, because we are part and parcel of Krishna. And the Lord is called as Vibhu. Vibhu means great. So Krishna, who is Supreme Personality of Godhead, Charayan. Charayan means he was roaming around, enjoying the pastimes of Vrindavan. Yamuno Pavane Kujad. Yamuna Upavan. So on the bank of the Yamuna, there were many forests, there were many gardens. So Krishna, he would roam around in those forests near Yamuna, river Yamuna. And Kujar, and he would speak with the gopis and Krishna's friends in Vrindavan. Vija Sankuli Tangripe. And Vija means the Brahmanas, or those who are second birth, those who have taken second birth. So here the birds, you see, Sankulit Angripe, the birds and even animals and the trees of Vrindavan are compared to great Brahmanas. You see. So Lord Krishna, when he was roaming around in Vrindavan, and when he is enacting his pastimes, when he is manifesting his pastimes of Braj Mandal or Sri Vrindavan Dham, so at that time, all the cowherd men and all the people whom Krishna was, who were with Krishna at that time, they were all not ordinary people. They were all Dvija. They were all great sages in their past life. And because of that, because of their pious activities, they got an opportunity to associate with Krishna in this life. So basically, Nanda Maharaj and Yashoda Maiya in Vrindavan, they were Vaishyas. Vaishyas means the farming community. So they were villagers, and Nanda Maharaj used to be the king of Braj Mandal or Vrindavan. He was the king of Vrindavan. And they belonged to Vaishya community.
Vaishya means mercantile community. And it is the duty of mercantile community or Vaishya community to take care of farming and cow protection. These are the two things which Vaishyas are meant to do, which Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, that Krishi Go Raksha Vanijjam Vaishya Karma Swabhavajam. It is the duty of Vaishyas to give protection to the cows. It is the duty of Vaishyas, the mercantile community, to give protection to cows. Just like Kshatriyas, they are to give protection to Dharma, they are to protect Dharma. Similarly, Vaishyas are meant to protect cows. That is what is their prescribed duty. That is prescribed duty for Vaishyas by the Lord. But when a person does not follow his prescribed duty, then he becomes sinful. So for Vaishyas, natural work is they have to do cow protection and they also have to do farming. These two are prescribed duties for Vaishyas or mercantile community. And Krishna, when he was living in Vrindavan, he was living in the house of great Vaishyas or great mercantile community, who were his mother and father, Nanda Maharaj and Yashoda Maiya. So the people who used to live with Krishna in Vrindavan, they are not ordinary people. They were not ordinary. You see, that's why it is mentioned, Dvija Sankulitangripe. They were all Dvija. Although they looked like cowherd men and women, and sometimes they would look like cows and calves and different people. Whom Krishna would associate with, it looked as if they are ordinary people or ordinary animals. But all these people, they were not ordinary animals. Who were they? So Dvija. Because of so many pious activities in their past lives, they got this opportunity to be born in Vrindavan and associate with Krishna in Vrindavan. So these all the people who were with Krishna, with whom Krishna displayed his beautiful Vrindavan pastimes, all his associates, they were not ordinary people. They were all, because they were all treating Krishna on an equal platform. The friends of Krishna, whom Krishna used to play with, so they never used to think that he is Krishna. For them, he was his friend. Krishna was their friend for them. So they never thought of Krishna as a great personality or God or anything like that. They were simply in love with Krishna. They were simply engaged in service of Krishna. They were simply were friends of Krishna. But actually speaking, although they appeared, when Krishna appeared, they also appeared as great saintly people. So great saintly people, they took birth in Vraj Mandal before. So that is why all these people who were there with Krishna in Vrindavan, they were not ordinary people. They were part of most excellent and super excellent pastimes in the whole universe. They were all a part of Krishna's pastimes. And they all were the greatest saintly people of the whole universe. They appeared with Krishna when Krishna descended on earth.
So even the trees and birds and beasts and animals and cows and monkeys of Vrindavan, they are not ordinary. They are all most pious living entities in the whole creation. Just to give pleasure to the Lord, just to be a part of Krishna's pastimes, they all appeared in Vrindavan along with Krishna. They are not ordinary because they appeared with Krishna to take part in Krishna's pastimes. In fact, there is a pastime about Krishna in Vrindavan. So when Krishna was to descend on earthly planet in the universe, so all the great personalities in the whole universe and all the planetary system, they came to know that Krishna is about to appear as the Lord of the universe in Vrindavan. Right? So when they came to know that the Supreme Lord is appearing in Vrindavan, they all lined up before Lord Brahma because all of them wanted to associate with Krishna. So they all lined up before Lord Brahma that Lord Brahma, please give us birth in Vrindavan. Please give us bodies in Vrindavan. So Lord Brahma could not say no to devotees. So he started giving these great souls of the universe bodies in Vrindavan. So, but then, so all the planetary systems, so many living entities, they started queuing up before Lord Brahma because everyone wanted to appear in Vrindavan. So people from upper planetary systems, the topmost planetary system, they also came to know. So when they came to Lord Brahma said that no, now it's houseful. Now I have given birth to so many living entities, 9 lakh cows, so many trees and everything. So Lord Brahma said that no, now I cannot give any more bodies to you. So these great devotees, great saintly people in the universe, they said that do something. We also want to appear and associate with Krishna. So they said, at least make us dust in Vrindavan. So Lord Brahma said, okay, then I'll make you dust in Vrindavan. So even the dust in Vrindavan is not ordinary. Even the dust that you see in Vrindavan, that is special. That's why in Vraj Mandal they say, Vraj ki raj lotan nahi kyo na yamuna paan. Are man tu dekh le Vraj ka tatva mahan. So it is mentioned in one of the Puranas that just going to this tract of land called Vrindavan, we become pure, we become completely purified, because even the dust of Vrindavan are these great devotees in the upper planetary system. They appeared as dust of Vrindavan. So in Vrindavan, in that tract of land, every living entity, even non-living entity, they are all special, very, very special. So still Vrindavan is there. And anyone who visits Vrindavan, even today, they experience the same bliss, that same topmost blissful bliss of life they experience. Even today, all the devotees, they experience that blissful life of Vrindavan. Although Krishna may not be physically visible to us in Vrindavan right now, but this land of Vrindavan is considered to be identical to Krishna. There is no difference. Krishna has descended in this material world in the form of his dham. So that's why, because
This place of Vrindavan is identical with Krishna. That's why we are seeing Uddhav and Vidur. They all are desiring to go to Vrindavan. All these beautiful pastimes are happening in Vrindavan. And still there are millions of devotees from all over the world who come to Vrindavan and they experience the same bliss and they are roaming around in Vrindavan because all of them, they are preparing themselves to go back to home, back to Godhead. So even today, we see millions of devotees from all over the universe. Of course, those who are devotees on earth, we can see them, but millions of devotees from all over the universe, they come to Sri Vrindavan Dham to get so they all want to go back to Krishna. And that is why even today, millions of devotees come to Vrindavan and prepare themselves to go back to home, back to Godhead. Now, text 28, shloka number 28. Kaumarim darshayam cheshtam prekshaniyam brajaukasam rudran ivaha sanmugdha बालसिंहावलोकनः कौमारीं दर्शयं चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजौकसां रुद्रन्निवह सन्मुग्धा बालसिंहावलोकनः. Translation: when the Lord displayed his activities just suitable for childhood, he was only visible to the residents of Vrindavan. Sometimes he would cry and sometimes laugh, just like a child, and while so doing, he would appear like a lion cub. Now you see. So, Kaumarim Darshayam Cheshtam. Kaumarim. Kaumari means the childhood pastimes of Krishna. Darshayan, to see, to witness these childhood pastimes of Krishna. Vrajaukasam, so those who were in Vraj Mandal, those who were in Vrindavan at that time, $5,000 years back, only those who were present in Vraj Mandal in Vrindavan, Prekshaniya, Prakshaniya, only they were eligible to see Krishna's pastime. No one, it's not that they were somehow they were seeing Krishna. No, they were qualified to see Krishna. They made themselves qualified to see Krishna. Because many a times people ask that how to see God. So to see God, to see Krishna, you need to have the qualification. So these Vrajvasis, these Vrindavan devotees, they were worthy to see Krishna because of their qualification. Rudra Nivaha Sanmugdha. And sometimes Rudra means Krishna would sometimes cry, sometimes laugh, sometimes so many emotions Krishna would show to all these Vrindavan devotees. And Bala Simhavalokana. Bala Simha. And Krishna would act just like Bala Simha. Bala Simha means a baby tiger or a baby lion or a cub. So when Krishna was playing his beautiful pastimes in Vrindavan Dham, Kans would send many demons to kill Krishna. Right?
But Krishna would kill all these enemies very easily. It was not a problem for Krishna to kill these enemies. So that's why here it is mentioned, Bala Simhavalokana. It looked as if Bala Simha, it looked as if small tiger or little tiger and lion, they are playing. So Krishna here is compared to Bala Simha or a little lion or tiger. So whenever Krishna, so the pastimes of Krishna in Vrindavan were very, very beautiful, most pleasurable pastimes. And in these pastimes, Krishna would sometimes, he would cry, he would laugh, he would do so many things and so many emotions he would show to these Vrindavan Vasis, Vrindavan devotees. Just like a child, when he's given something, he would cry. If he's not given something, that the child will cry. And if the child is given something, he'll stop crying and he'll start laughing. So Krishna was playing the part of a small child of Vrindavan, and Krishna used to so when Krishna would do this, when Krishna would display these emotions of crying, laughing, all these beautiful emotions, all the residents of Vrindavan, including Nand Maharaj, Yashoda Maya, the Gopis, Radharani, Balaram, all of them would get immersed in transcendental pleasure, in transcendental blissful life. They will all enter into that realm of transcendental pleasure. But only the devotees of Vrindavan or Vraj Mandal were eligible for these beautiful ecstatic pastimes of Krishna and his devotees. So when Krishna would kill these demons, so Kans will sell lot of demons to kill Krishna. And when Krishna would kill these demons like Aghasur, Arishtasur, demons. So whenever Krishna would kill these demons, the friends of Krishna would wonder, oh my God, Krishna is such a powerful personality. And they would come and tell all these things to Yashoda Maya, Mother Yashoda. And when Mother Yashoda and Nand Maharaj, they would hear about this, they will also wonder, oh my God, our son is so great. Our son is not ordinary. But they would never contemplate that he is the supreme personality of Godhead. Because Krishna never wanted them to know that Krishna is the supreme personality of Godhead, because if they would know that Krishna is supreme personality of Godhead, they will not be able to love Krishna the way he wants them to love him. So Krishna did not only belong to Nanda Maharaj and Yashoda Maya, he belonged to whole Vrindavan. And everyone loved Krishna. He was the life and soul of Vrindavan. So all the devotees of Vrindavan, Krishna was their life and soul. Krishna was everything for them. And they were so much in bliss when they would see Krishna performing these pastimes.
this bliss would increase every day. Whenever they would see Krishna, that bliss, that ananda will increase. So that's how Krishna enacted his pastimes in Vrindavan, and everyone in Vrindavan was affected by these pastimes, and they all felt transcendental ecstasy for Krishna in Vrindavan. Now text 29, shloka number 29. Sa eva godhanam lakshmya niketam sitago vrisham charayan anugan gopan ranad venur ariramat. Sa eva godhanam lakshmya niketam sitago vrisham charayan anugan gopan ranad venur ariramat. Translation: while herding the very beautiful bulls, the Lord, who was the reservoir of all opulence and fortune, used to blow his flute, and thus he enlivened his faithful followers, the cowherd boys. Now you see what used to happen. Uddhav, Sri Uddhav, he is remembering these pastimes of Krishna, because those pastimes of Krishna are super excellent and most blissful and pleasurable. If a person hears Vrindavan pastimes of Krishna, he will enter Golok Vrindavan, even if a person is very, very sincere in devotional pastimes. He is very sincere in his devotional service to Krishna. Then, and if a person sincerely hears these pastimes of Krishna in Vrindavan, then the person becomes eligible to enter into Golok Vrindavan. So that's why Uddhav is remembering those pastimes, because he does not want to stay here in this material world. He wants to go back to Krishna. So Saeva Godhanam Lakshmya. Godhanam, Godhan, you see, the word dhan means money, wealth. So what is the wealth which is talked about here in this shloka? The wealth that Uddhav, Sri Uddhav is talking about in this shloka is Godhanam, wealth which is cow. Lakshmya, fortune. All fortune is there because of cows. And Krishna is the reservoir of all fortune, and because he loves cows, cows are also reservoir of good fortune. So Godhanam Lakshmya Niketam Sita Go Vrisham. And these cows were so beautiful. So Krishna would, now these cows were very beautiful during those times. Cows were very beautiful. But not everyone will be able to realize that. So when Krishna grew 6-7 years old, from when he was born, he was given charge of tending the cows and calves of Vrindavan, along with his friends. The friends also got this service. Because Vaishya community means they are protectors of cow, and they keep cows. They will always serve cows. Because according to Vedic scriptures, according to our ancient Vedic civilization,
The prosperity of a man depends on number of cows he has and land that he possesses. Right? A rich man means a rich man used to be judged by number of cows he has. That used to be considered as richness. Like Krishna had 9 lakh cows, 900,000, and Radharani, her father, had 11 lakh cows, 110,000 cows. So that is like, according to Vedas, a person who possesses cows is a rich person. In fact, if just this human society can protect cows and land properly, all economic problems are solved simply if a person keeps cow and land. That's all. All his economic problems are solved. He does not need anything in this world. So Krishna is showing by his practical example that every Vaishya, every mercantile community person must protect cows, must take care of cows. They must serve the cows. And that is why, because cows give us the most miracle food, which is milk. And also cows, they give us future cows. So the cows and little land solves all economic problems of a person. So that is why cow is considered as a mother, because she gives us milk. And bull is compared as father of the society, because with the help of a bull, you till the land, you cultivate the land, and you get good food. So like a father gives us food, similarly bull gives us food. So cow and bull, they are considered to be the most auspicious animals, and human society cannot prosper if they do not protect cows and bulls. So Krishna, by showing his practical example that a Vaishya or a mercantile community means he must protect cows and bulls. So here it is mentioned, Charayan Anugan Gopan Ranad Venur Ariramat. And Krishna, Venu means flute. So Krishna would play his flute. And when Krishna would play his flute, all the Brajmand, all the Vrindavan devotees, they would go crazy in love with Krishna. They would forget everything and they would run towards Krishna, everyone. Venum Kvanantam Arvinda Dalaya Taksham. So Krishna's flute attracts everyone in the whole universe. So as soon as the Brajvasis or Vrindavan devotees, they heard Krishna's flute, they would forget everything in this whole material creation and they will run towards Krishna. This is how the pastimes of Krishna were there in Vrindavan. So you can like the video, you can comment. We'll stop here. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी Jai Radha Madhava Jayo Kunja Vihari Jayo Gopi Janavallabha Girivaradhari. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी हरे कृष्णा। आप सबका बहुत स्वागत आज के भागवत के सत्र में। प्रार्थना के साथ अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हमने देखा अपने पिछले सत्र में कि किस प्रकार उद्धव जी जो हैं वो कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं और मुख्यतः कृष्ण भगवान जो वृंदावन में प्रवेश कर चुके हैं और किस प्रकार वो कंस के कारागार में पहले तो उनका जन्म हुआ और फिर वसुदेव जो हैं वो कृष्ण भगवान को
इस प्रकार वृंदावन लेकर आ गए कंस के भय से, क्योंकि कंस, उनको भय था कि कंस जो है वो मेरे पुत्र को जीवित नहीं छोड़ेगा, तो इसलिए वो उन्हें ब्रजमंडल लेकर आ गए। और जब वो ब्रजमंडल लेकर आ गए तो अब कौन सी लीला, क्या क्या लीला भगवान ने की, अब उसको हम देखेंगे। तो 27वें श्लोक से अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। 27वां श्लोक। परितो वत्स पैर्वत्साम चारयन् व्यहरत् विभुः यमुनोपवने कूजत् अभिच्य संकुलितांग्रिपे। परितो वत्स पैर्वत्सां चारयन् व्यहरत् विभुः यमुनोपवने कूजत् विजयसंकुलितांग्रिपे। Translation, अनुवाद। In his childhood, the Almighty Lord was surrounded by cowherd boys and calves, and thus he traveled on the shore of the Yamuna River through gardens densely covered with trees and filled with vibrations of chirping birds. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो बचपन में परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गाय और बछड़ों से और गोपाओं से घिरे रहते थे, और यमुना के तट पे उसके बागीचों में और वनों में कृष्ण अपना विचरण करते थे, जहां पर वृक्ष और पक्षी सभी भगवान के शुद्ध भक्त हैं और पाप रहित। बात देख। तो हम देख रहे हैं कि परी तो वत्स पैर वत्साम की ब्रजमंडल में, वृंदावन में वत्स पैर वत्साम कि ये जो वत्स पैर मतलब ये जो बच्चे थे ब्रजमंडल के, जो कृष्ण के साथ खेलते थे, व्यहरत विभु, जिनके साथ विभु, विभु का मतलब भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, व्यहरत विभु, तो वो इन बच्चों के साथ घूमते थे, खेलते थे, कूदते थे। यमुना उपवने कूजत, तो यमुना के तट पर ये लोग तो यमुनो उपवने कूजत द्विजस संकुलितांग्रिक, तो यमुना के तट पर भगवान श्री कृष्ण अपने जो गोप हैं, गोपाएं हैं, उनकी जो गायें हैं और विशेषतर गायों के जो बछड़े हैं, उनके साथ भगवान कृष्ण जो है यमुना के वन में, यमुना के बागीचों में, यमुना के तट पे और ब्रजमंडल में सब जगह विचरण करते रहते हैं। तो अब आप देखिए, ये जो वृंदावन की जो लीलाएं हैं उसको याद कर रहे हैं उद्धव, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की सबसे सुंदर लीलाएं हैं भगवान की बाल्य लीला। जो छोटे बच्चे होते हैं वो जो लीला है कृष्ण भगवान की, सबसे अद्भुत है, सबसे सुंदर है। तो कृष्ण जो थे वो क्या करते थे, वत्स पैर वश्चात कार्य व्यहरत विभु, कृष्णा जो है वो गाय को चराने जाते थे, गाय और बछड़ों को चराने जाते थे अपने
मित्रों के साथ, अपने सारे जो उनके पार्षद हैं उन लोगों के साथ, क्योंकि ये जो वैश्य लोग होते हैं, जैसे हम जानते हैं 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो वैश्य होते हैं यानी जो बिजनेस क्लास होते हैं, जो मर्केंटाइल कम्युनिटी होते हैं, जो व्यापार करते हैं, उनका यह दायित्व है कि वो गायों की सुरक्षा करें, गायों की रक्षा करें, क्योंकि ये भगवान कृष्ण स्वयं भगवत गीता में बताते हैं कि कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य धर्म स्वभाव। तो कृषि, कृषि का मतलब फार्मिंग, और गौरक्षा का मतलब होता है गायों की रक्षा करना। जिस प्रकार जो क्षत्रिय होते हैं वर्णाश्रम में, वो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए जीवन बलिदान करते हैं, उसी प्रकार जो वैश्य हैं यानी जो बिजनेस क्लास है या जो व्यापार करने वाले लोग हैं, वो लोग गौ की रक्षा यानी गायों की रक्षा करने के लिए उनका ये कर्तव्य है, उनका ये कर्म है, ये उन्हें करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए श्लोक में कह रहे हैं पूजद द्विज संकुलितांग, जो द्विज संकुलितांग है। अब ये जो वृंदावन की जो गायें थी और जो वृंदावन के जो भगवान के जो भक्त थे, जो उनके पार्षद लोग थे, जो गोपाएं थे, जो गायों के बछड़े थे, जो गायें थी, ये लोग साधारण लोग नहीं थे। ये लोग सब यहाँ पे देखिए, आप इस श्लोक में लिखा है पूजत द्विज, तो ये लोग द्विज थे, ये लोग द्विज थे। तो द्विज संकुलितांग, तो ये जितने भी जीव थे उस समय वृंदावन धाम में, ये लोग सब द्विज थे। द्विज का मतलब कृष्णा के शुद्ध भक्त थे, और जन्म जन्मांतर से उन लोगों ने इतनी भक्ति, इतनी तपस्या की, जिसके कारण उनको ये मौका मिला इस जन्म में कि वो 5000 साल पहले कृष्ण भगवान जब धरती पर स्वयं थे तो उनकी सेवा कर सके। तो उन्हें जो ये औदा मिला, भगवान कृष्ण के साथ उनको रहना, खाना, पीना, हंसना, बैठना, ये सब मिला, ये सब जो है तो इनमें कई जन्मों की जो तपस्या की थी, जो भक्ति की थी, उसके कारण इन्हें ये जन्म मिला, और भगवान की सेवा में इनको भगवान के बराबर का औदा भक्त स्वयं कृष्णा ने दिया। तो ये जितने भी ब्रजवासी थे, लोग कोई साधारण लोग नहीं। जैसे मुझे ये लीला एक ध्यान आती है कि जब कृष्ण भगवान पृथ्वी पर, उनको आना था इस ब्रह्मांड के कल्याण के लिए, जब भगवान श्री कृष्ण को आना था, तो ये बात जो है पूरे ब्रह्मांड में सब जगह फैल गई कि कृष्णा अवतरित होने वाले। अब ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, उन सबको जन्म लेना था वृंदावन में, उन सबकी इच्छा थी, उन सबको वृंदावन में जन्म लेने की इच्छा थी। तो उन सब लोगों ने ब्रजमंडल वृंदावन में जन्म लेने के लिए ब्रह्मा जी के पास सबने अपनी अर्जी जो है वो लगाई कि ब्रह्मा जी से बोला हमें भी जन्म दो, हमें भी जन्म दो।
तो जितने लोग आए ब्रह्मा जी सबको देते गए। तो जब उन्होंने सबने ब्रह्मा जी को बोला कि, तो ब्रह्मा जी सबको जन्म देने लगे, सबको शरीर देने लगे ब्रजमंडल में, वृंदावन में। अब ऊपर और ऊपर के लोगों वालों को पता लगा तो वो भी आए ब्रह्मा जी के पास। तो उन्होंने बोला कि ब्रह्मा जी हमें भी जन्म दीजिए आप वृंदावन में, हम भी कृष्णा का संग चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने बोला अरे अब तो फुल हो गया, हाउसफुल हो गया, अब तो जगह ही नहीं बची है, अभी कहाँ तुमको शरीर दूं मैं। तो उन सब ने कहा कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, हमें आप ब्रजमंडल का, वृंदावन का धूल बना दीजिए। तो ब्रज की रज, ब्रज की जो धूल है वो भी अद्भुत है। सारे शुद्ध भक्त हैं कई जन्मों के। तो ब्रज में, ब्रजमंडल में, वृंदावन में जो भी जीव है या जो जीव नहीं भी है, सभी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, सभी अद्भुत। तो इसलिए सारे जीव जो हैं, ये सब ने कई जन्मों की तपस्या की थी, तो आज उनको ये मौका मिला, जो उद्धव जी याद कर रहे हैं, उनको ये मौका मिला कि वो भगवान कृष्ण के संग में रह सके। तो वृंदावन धाम जो है, यहाँ पर भगवान कृष्ण की सबसे सुंदर लीलाएं, जो बचपन की लीलाएं हैं, वो हुई। और आज भी है, आज भी वृंदावन धाम में पूरे विश्व से करोड़ों लोग आते हैं और अपना जीवन सफल बनाने के लिए वृंदावन में वो परम आनंद की प्राप्ति करते हैं। और जो आनंद उस समय इन ग्वालों को और गायों को आता था कृष्णा के संग में, वही अनुभव हर जीव, जो भी वृंदावन जाते हैं, वही अनुभव सबको आज भी होता है। 5,000 साल पहले कृष्ण जो अनुभव था ब्रजवासियों का और गायों का, वही बिल्कुल वही अनुभव आज भी उपस्थित है ब्रजमंडल में। तो कृष्णा जो है, हमको भले ही इन नेत्रों से हम नहीं दर्शन कर पाते, लेकिन आनंद आज भी वही है। और ब्रजमंडल को कहते हैं कि वृंदावन जो है वो कृष्णा से अलग नहीं, दोनों एक ही हैं। और क्योंकि वृंदावन जो है वो बिल्कुल कृष्णा जैसा ही धाम है, तो बड़े बड़े महान योद्धा और बड़े बड़े महान भक्त जितने भी हैं, उद्धव और जैसे यहाँ पे महात्मा विदुर, ये लोग सब वृंदावन में स्नान करके अपना जीवन, वृंदावन में यमुना में स्नान करके अब वृंदावन जाके अपना जीवन सफल बनाते हैं। और हजारों लाखों करोड़ों भक्त आप देखेंगे वृंदावन धाम में रहते हैं, और उनका एक ही लक्ष्य है, उन्हें कृष्णा के धाम वापस। तो वो लोग सब कृष्णा के दिव्य धाम का दर्शन करके वो लाभ जो 5,000 साल पहले था वो सब उठाते हैं। और उन सबका एक ही लक्ष्य है, भगवान के धाम वापस जाना, गोलोक वृंदावन वापस प्रवेश करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। ऐसे करोड़ों भक्त जो है पूरे विश्व से वृंदावन धाम आज भी आते हैं। 28वां श्लोक, कौमारीं दर्शयंश्चेष्टाम्
प्रेक्षणीयां व्रजौकसां रुद रुदन्निवह सन्मुग्ध बालसिंहावलोकनः कौमारीं दर्शयंश्चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजौकसां रुदन्निवह सन्मुग्ध बालसिंहावलोकनः. Translation, अनुवाद. When the Lord displayed his activity just suitable for childhood, he was only visible to the residents of Vrindavan. Sometimes he would cry and sometimes laugh, just like a child, and while so doing, he would appear like a lion cub. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में. तो कृष्ण ने जब अपनी बाल्य लीलाओं को दर्शाया तो ये सिर्फ वृंदावन के लोग ही देख पाए. कभी वो रोते थे, कभी हंसते थे, जिस प्रकार एक छोटा बच्चा करता है, और ये सब करते हुए वो एक बाघ के बच्चे जैसे दिखते थे. अब आप देखिए, कौमारीं दर्शयं चेष्टा. दर्शयम, दर्शयम मतलब दर्शन करना, और कौमारीं दर्शयं चेष्टा. तो दर्शयं चेष्टा, कौमारीं दर्शयं चेष्टा. तो कृष्णा ने अपना दर्शन दिया. प्रेक्षणीयाम व्रजौकसा. तो ये जो दर्शन है कृष्ण की बाल्य लीलाओं का, कौमारी मतलब बाल्य लीला भगवान कृष्ण की, तो कृष्णा की जो बाल्य लीला है उसका दर्शन सिर्फ व्रजवासियों को ही हो पाया. वो ही इस योग्य थे कि उन्हें कृष्णा के इन लीलाओं का दर्शन हुआ. रुदन निवह सन्मुग्ध. और कृष्ण जो थे वो वहां पे हंसते थे, गाते थे, खेलते थे, कूदते थे, बोलते थे, रोते थे. तो इन 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 चीजों का दर्शन सिर्फ ब्रजवासी ही कर पाए. बाल सिंहावलोकन. और ये सब करते हुए ऐसा लगता था जैसे कोई बाल सिंह. सिंह का मतलब होता है शेर, बाघ. तो छोटा शेर का बच्चा हो जैसे. तो छोटे शेर के बच्चे से क्यों तुलना किया गया है यहाँ पर? क्योंकि कृष्णा जब क्योंकि कंस जो था वो बहुत बड़े बड़े दानवों को भेजता था कृष्णा को मारने के लिए, और इन दानवों को कृष्णा मारते रहते थे जैसे कैसे एक शेर का बच्चा होता है. तो वैसे थे तो वो बच्चे, लेकिन शेर जैसे, इसलिए बाल सिंह कहा गया है.
तो इसीलिए यदि किसी को कृष्णा के बाल्य लीलाओं का आस्वादन करना, तो व्रज मंडल व्रजवासी जो हैं उन्होंने वो किया। बच्चा जैसे छोटा होता है तो रोता है, हंसता है, खेलता है, कूदता है, तो ये सारी चीजें कृष्णा ने भी की, और इसको ब्रजवासियों ने, नंद महाराज और यशोदा मैया ने, और जितने भी ब्रजवासी थे उन सब ने, राधा रानी ने, बलराम ने, इन सब ने आ, उसको देखा, उसका दर्शन किया। तो ये सिर्फ ब्रजवासी ही इसका अनुभव कर पाए, इन 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 लीलाओं को दर्शन कर पाए। और कृष्णा जितने भी जो राक्षस होते थे, जो दानव होते थे, जिसे कंस भेजता था, उसे मार भी देते थे। तो कृष्णा के जो दोस्त थे वो आके बताते थे ब्रज में अपने मैया को, अपने पिता को, कि कृष्णा ने ऐसा किया है। तो जब वो सुनते थे तो वो भी आश्चर्यचकित हो जाते थे कि हमारा कृष्णा कितना अद्भुत है, ये कितना अद्भुत बालक है, कितना अलग बालक है, हम कितने भाग्यशाली हैं कि कृष्णा हमारे गांव में पैदा हुआ है, ऐसा ये लोग सोचते। लेकिन कभी कृष्णा को ऐसा नहीं सोचा उन्होंने कि ये भगवान है, विष्णु है, विष्णु के अवतार हैं, या स्वयं परम पुरुषोत्तम है। ऐसा किसी ने नहीं सोचा। क्यों पता है? क्योंकि कृष्णा चाहते ही नहीं थे कि वो लोग को ये सब पता लगे। क्योंकि यदि ये पता लग जाएगा तो फिर वो जो प्रेम का रस है जो आस्वादन कर रहे थे, ये प्रेम का रस का आस्वादन नहीं कर पाएंगे ब्रजवासी, और कृष्णा भी। तो इसलिए कृष्णा नहीं पता लगने देते थे। तो जितने भी ब्रजवासी थे, तो ऐसा नहीं कि कृष्णा सिर्फ नंद महाराज और यशोदा मैया को ही दर्शन होते थे इन लीलाओं के, नहीं, कृष्णा तो सारे ब्रजवासियों के जीवन थे। मुरलीधरा, यशोदा जीवन, ब्रज जीवन। तो वो ब्रज मंडल, ब्रज के जितने भी निवासी थे, उन सब के कृष्णा जो थे वो जीवन थे, उनके जीवन का आधार थे। उनको दर्शन करके ही लोग जीवित थे। तो बहुत ही सुंदर लीलाएं जो हम यहाँ देख रहे हैं कि कृष्णा की जो ये बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, ये ब्रजवासियों को ही ये दर्शन हो पाए। पूरे ब्रह्मांड में वो ही जो थे, वो इतने सौभाग्य था उनका कि उन्हें कृष्णा की इन लीलाओं का दर्शन हुआ। और ये सौभाग्य आता है क्योंकि कई जन्मों का उनका तप है, जप है, जिसके कारण उनको ये जन्म मिला ब्रजमंडल, ब्रजभूमि में, वृंदावन धाम में। 29वां श्लोक। स एव गोधनम लक्ष्म्या निकेतम सित गो वृषम चारयन्ननुगान गोपान रणद वेणुरमत। स एव गोधनम लक्ष्म्या निकेतम सित गो वृषम चारयन्ननुगान गोपान रणद वेणुरमत। Translation: While herding the very beautiful bulls, the Lord was the reservoir of all opulence and fortune, used to blow his flute, and thus he enlivened his faithful followers, the cowherd boys. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो जब भगवान श्री कृष्ण गायों को और बैलों को चराते थे, तो सारा भाग्य, सब कुछ कृष्णा के कारण इस पूरे ब्रज मंडल में प्रकट हो जाता था। और जब अपने बांसुरी बजाते थे, वेणु, तो सभी ब्रजवासी और विशेषतः भगवान के जो शुद्ध भक्त, जो दोस्त थे, वो सब आनंदित हो उठते थे। तो अब आप देखिए,
स एव गोधनम लक्ष्म्या। गोधनम, तो यहां पर इस श्लोक में उद्धव जी जो है गोधन कह रहे हैं, गोधन। तो धन की बात हो रही है, लेकिन यहां पर धन किससे तुलना किया गया? धन का मतलब गोधन, जिसके पास गाय है वही धनवान है। तो कृष्णा जब 7-8 साल के हो गए थे, 6-7 साल 8 साल के, तो कृष्णा को गायों का भार दे दिया था नंद महाराज ने। तो कृष्णा गायों को लेके जाते थे चराने के लिए, गाय बछड़े, और उनके सारे सखे, सारे दोस्त लोग साथ में होते थे। तो शास्त्रों के अनुसार किसी भी मनुष्य का उसके उसका धनवान होना या निर्धनता गायों पे निर्भर करती। कोई भी मनुष्य धनवान तब माना जाता था उस टाइम पे जब उसके पास गाय होती थी। जितनी गाय उतना धनी मनुष्य। कृष्णा के पास 9 लाख गाय थी और राधा रानी के पिता के पास 11 लाख गाय थी। तो यदि किसी भी मनुष्य के पास बस थोड़ा सा भूमि का टुकड़ा हो, और यदि उसके पास शुद्ध देशी सुंदर गाय हो, तो उसे फिर किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। उसका सारा जो इकोनॉमिक, या हम कह सकते हैं जो भी अ, उसका जीवन है, वो बड़े आसानी से बहुत अच्छे से वो निकाल सकता है। सिर्फ यदि गायों की रक्षा की जाए तो मनुष्य इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आ सकता है। और क्योंकि गायों की सेवा करने से मनुष्य अच्छा अन्न खाएगा, तो पूरे विश्व के अन्न का जो समस्या है वो नष्ट किया जा सकता है सिर्फ गायों की रक्षा करके और भूमि को सींच कर गायों से। तो छोटा सा भूमि का टुकड़ा और गाय हो तो मनुष्य जीवन में अपना सफल हो सकता है, क्योंकि वो अच्छा खाएगा तो भगवान की भक्ति करेगा। बाकी का जो बचा हुआ टाइम है भगवान की भक्ति में लगाएगा और भगवान के धाम वापस पहुंच जाएगा। तो मनुष्य को सिर्फ गाय और भूमि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब कुछ तो आ, बनावटी जीवन है, जिसे हमने बनावटी किसी तरह से बनावटी हमने जीवन बनाया हुआ, जीवन शैली बनाई हुई। वास्तविक रूप में इन दोनों चीजों के अलावा किसी भी और चीज की आवश्यकता नहीं है जीवन जीने के लिए। तो कृष्णा ने स्वयं अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से दिखाया है कि जो व्यवसाय वाले लोग हैं, व्यवसाय वाला वर्ग है, यानी जो वैश्य लोग हैं, जिनका दायित्व है कि वो गायों की रक्षा करें। क्योंकि गाय जो है वो माता है, क्योंकि माता हमको दूध देती है, तो गाय हमारी माता है। और बैल जो है वो हमारे पिता है, क्योंकि उनके माध्यम से हम भूमि को सींचते हैं और हमें अन्न मिलता है। जैसे पिता खाना देता है और माता दूध देती है, उसी प्रकार गाय और बैल हमारे माता और पिता हैं। तो यदि हम इन्हें मारते हैं, इनकी रक्षा नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा अभिशाप है समाज के ऊपर। तो हमारा पूरा जीवन शैली नष्ट हो जाता है यदि गौ रक्षा न हो, जो वैश्यों का दायित्व है। और फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर इस श्लोक में? रणद वेणुररी रमत। और कृष्णा खड़े होके बांसुरी बजाते थे। वेणु, वेणुम पणंतम अरविंद दलायता। कृष्णा बांसुरी बजाते थे, और जैसे ही बांसुरी बजाते थे सारे ब्रजवासी सब कुछ भूल जाते थे। सब कुछ भूल कर कृष्णा के पास पहुंच जाते थे।
सारा आनंद, सारा भौतिक आनंद, कोई भी आनंद उनके ध्यान में आता ही नहीं था। सब कुछ छोड़कर भगवान को समर्पित हो जाते, सब कुछ भूल जाते थे, उन्हें कुछ याद नहीं रहता, सिर्फ कृष्णा की जो धुन है वेणु की, वो तो जो कृष्णा की जो ध्वनि सुनते थे, जब उनकी अ, बांसुरी की ध्वनि सुनते थे, तो सब लोग बिल्कुल एक पागलपन आ जाता था, उनमें भाव विभोर हो जाते थे और भागते थे कृष्णा की ओर, सब कुछ छोड़कर। तो तो कृष्णा से संबंधित सब कुछ बहुत ही अद्भुत है, चाहे वो अ, गाय हो, गोपाएं हो, ब्रजमंडल हो, या फिर उनकी वीणा हो, उनकी बांसुरी हो, वेणु, सब कुछ ही कृष्णा के संबंध में अद्भुत और उनका विशेष अ, महत्व है। तो इस तरह से उद्धव जी जो है वो याद कर रहे हैं ब्रज की लीलाओं को, कृष्ण की, क्योंकि वृंदावन लीला जो है कृष्णा के पूरे ब्रह्मांड में इतिहास में सबसे सुंदर लीला है, और सभी भक्त इसको स्मरण करके अपना जीवन सफल बनाते हैं और भगवान के धाम वापस जाने की तैयारी करते हैं। तो ये हम यहाँ देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, आज यहीं अपने सत्र को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।